Welcome back to Interact with Intellect. In the previous session, we were discussing in detail about what are the project initiation activities that are usually performed before starting a project. Once we get an approval, we have to go on with the execution of the project, and this is what we are going to discuss in this very session. Whenever you start a project, the first thing that you make is a project plan. Please remember that this is done after the initiation phase, that is, once your business case is approved, once you get a green signal from the management to go for a project, so phir aap, the next stage is to make a project plan. Project plan क्या है? Project plan is a detailed document जिसके हम अभी contents आपसे तफसील से discuss करेंगे, but project plan basically helps us in a number of areas. Project planning, a formal project plan basically helps us in communicating what has to be done. It helps us in identifying the roles that people are going to play in the project. It also helps us in identifying what are the measures, what are the things that we would like to see in the project, and what will be treated as a success. So this is an important area which helps people understand that what is expected out of this project. Please remember, whenever you are in a project management situation, you are basically making commitments. A project is a commitment that you will be able to finish a particular activity by a particular time, and at the end of that you will be able to deliver certain results. So in order to make clear, crisp and attainable targets, you need to have something called a project plan. Now, project plan also helps us in identifying the resources that you are needing. At times ऐसा भी देखा गया है that in the project initiation stage you identified certain resource requirements, you identified certain costs, but when you make the actual plan, there is a minor deviation there. Why? Because जब आप detail में किसी चीज़ को thoroughly analyze करते हैं और उसकी planning करते हैं, तो आपको पता चलता है कि okay, certain things need more time or certain things need more resources. So by making a project plan, you actually make sure that the project is going to go in an organized manner. So with the help of a project plan, we actually break down the big project into smaller chunks, और इनको हम कहते हैं manageable units. यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने by road कराची से लाहौर जाना हो, तो आप one go में नहीं जाते. आप कहते हैं कि okay जी, we'll start from Karachi, maybe we'll stop at Hyderabad, have a cup of tea and get refueled, and we'll stop at Moro or at Sakhar. So what are you doing? You are dividing your journey into smaller chunks and you are identifying कि okay, हम ये काम कितनी time में कर लेंगे और वहाँ पे हम कितना time लगाएंगे, so that आपका जो time plan है till the end of your journey वो आप clearly identify कर सके. Now, when you identify various units or various components of the project, तो फिर आप हर एक के साथ उसकी resources भी allocate कर देते हैं. Resources may include people primarily. Sometimes it includes financial resources, and in some cases some material resources are also allocated which are needed for a certain stage of the project. किसी भी project में बहुत important role है उसके schedule का, और यही part हम यहाँ पे इस वक्त तफसील से discuss कर रहे हैं. Once the schedule is made, that basically highlights what are the steps and who is going to take the necessary steps, तो फिर उसकी execution बहुत आसान हो जाती है. My dear friends, हम प्लानिंग और कंट्रोल की बात करते हैं, और हम एक दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एनी एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट प्लान्ड इट वेल. तो ये वाला जो स्टेज जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज मेकिंग different components of the project and then allocating resources and identifying the timelines and all that. This basically is going to help us while we are executing the project. There are always two sides of project management. One is called the soft side of the project planning. क्या वो सारी चीजें जो human resource से related है, communication कैसे होगी, team building कैसे होगी, how people are going to coordinate with each other, ये सारी soft side of the project कहलाती है. Hard side of the project हम कहते हैं project के schedules को.
कि कब क्या चीज डिलीवर होनी है, कौन से इंडिविजुअल्स ने, कौन से यूनिट ने क्या चीज, कौन सा डिलीवरेबल कब हमें पहुंचाना है. दिस इज द हार्ड साइड, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी आमतौर पे नहीं दिखाते. जो सॉफ्ट साइड है, विच इज द पीपल साइड, वहां पे फिर भी हम थोड़ा सा वी ट्राई टू फैसिलिटेट पीपल, वी ट्राई टू सी दैट एवरीवन इज वर्किंग इन अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट. जब आप प्लानिंग स्टेप्स की बात करते हैं और जब आप इसको एग्जीक्यूट करने की तरफ जाते हैं, तो आप पहला काम क्या करते हैं कि आप पहले एक कोर टीम बना लेते हैं. कोर टीम क्या है? जो ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके और एंड तक आपके साथ रहेंगे. ये अगर कोई मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट है, मसलन आपने कहा कि हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, and that project will be implemented in maybe 5 different departments. So you will pick up people from all 5 departments as representatives and you will make a core team. This core team will be responsible for seeing off the project from start till the end. However, other people will come in and go at various stages in the project. इसकी एग्जाम्पल आप एक ड्रामा सीरियल की तरह समझ सकते हैं. जैसे बाज ड्रामा सीरियल्स में एक कोर कैरेक्टर्स होते हैं जो इन एनी केस हर उसकी किस्त में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ड्रामे में आते हैं और एक किस्त में आए और चले गए. इसी तरह प्रोजेक्ट में भी बाज लोग किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आते हैं और उनका एग्जिट हो जाता है, लेकिन कोर टीम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आपके साथ रहती है. सो द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोजेक्ट इज टू आइडेंटिफाई द कोर टीम. सेकेंड पार्ट इज जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि वो जो हम लॉजिकली डिफाइन कर रहे थे कि व्हाट आर द डिलीवरेबल्स. लॉजिकली देखें कि पहली चीज क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, और उसको फिर टीम बैठ के उसको डिस्कस करती है और फिर उस पे दे ट्राई टू फाइंड अ कंसेंसस ऑन दैट. व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द होल टीम इज नॉट एग्रीइंग ऑन द स्केड्यूल, unless and until they are not, they're not sure and they are not confident about what they are going to do, उस वक्त तक आपको टीम एफर्ट और टीम रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पाते. So therefore deliverables जो हैं, जो हमारी लॉजिकल सीक्वेंस है, उसको टीम के साथ डिलीवर किया जाता है. Then once they are convinced, they go back to their own departments, because if especially if we are talking about a project